So, quality questions form a significant and consistent part of the GK paper in every exam series, and there isn't a discernible measure increase or decrease in the overall number of quality questions. It remains a steady fast area of focus for the exam. Quantitatively, you can typically expect around 15 to 20 questions, sometimes slightly more or less, related directly to Indian polity in 120 question GK paper. Polity questions covers a wide spectrum of Indian constitution of polity systems. Key recurring areas include, so we will learn from here, introduction of the polity, some terminologies and salient features. We will read the preamble, basic structure of the constitution, fundamental rights. It will have current affairs, Supreme Court judgments, and we will understand it. And then it comes the union executive, legislative, means union government, and the state governments too, budgets and the bills. Then we will learn judiciary, tribunals, constitutional one and the other ones. Then we go into the federalism, and then we go for the miscellaneous part. Now let's start with what polity is. Polity is the structure of the government. Structure of the government or state. While politics is the art of running government. And then the questions arise. What constitution? The constitution has four meanings, at least some meanings. We can say. First, we can say it means to make something, to constitute something. Other, to set rules and regulations. And to ensure rule-based system. It can be written or unwritten. अब ये लिखा हुआ हो सकता है, लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे ये रिटन में है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन नहीं है। अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर जब आ रहे थे तब कैसा था, पहले हम जब कंट्री बनी थी उससे पहले क्या किस तरह का नेचर था। एनार्की थी, लाइक अलग डिफरेंट टाइप की होती है। सो व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर? दिस इज ए theoretical concept from political philosophy. It refers to life before organized government. लाइफ जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं थी उससे पहले किस तरह से थी। पहले जब ऑर्गेनाइज नहीं थी तो कैसे थी, नहीं केओटिक और एनार्किस्ट। जो जिसकी मर्जी है वो कर रहा है बस। अब एनार्की बोलते हैं लॉलेसनेस, लॉ ही नहीं है।
ये बहुत ही अप्रोप्रिएट वर्ड होगा बोलना. Then we come to evolution of the constitution. Constitution evolves through amendment, judicial interpretations, and changing social values. In so how this इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इवॉल्व होता है, लाइक यहाँ तो नॉर्मली हम इंडिया की बात करें तो अमेंडमेंट्स, judicial interpretations, and changing social values. But all of this can be summarized by the social contract. And social contract is based upon, it is based upon the consent based system. Our forefathers elected the representative to make the constitution, and this is the, they gave their consent, and whole nation together came. This has become the social contract of it, and this is how the constitution evolves. The constitutions also, we can say that it remains a living document. What is a living document? How it is change itself according to the need of the society and the things which are different is replaced or repealed, the law which are different, which are repealed. जो कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो काम का पार्ट है उसको हम बाहर हटा देते हैं, निकाल देते हैं, और जो काम का है, नई चीज़ें हैं, नई वैल्यूज हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं. अब देन इट कम्स द डॉक्ट्राइन ऑफ लिविंग ट्री, ए प्रिंसिपल फ्रॉम कैनेडियन constitution law. It means the constitution is organic and must be interpreted dynamically. It's not like पहले से कुछ कह दिया बस वही बनता चला है, बट नंबर वन इट्स organic and must be interpreted dynamically. Where it came from? Canadian Constitution law. It is called the doctrine of living tree. Canadian Constitution law. And India follows a similar philosophy through progressive judicial interpretations. For example, you will learn next how India follow this. How judicial interpretations. For example, Article 21. It is ever expanding article. You will learn later when we will reach there. And also the Union government amended the constitution. So we can say that
The constitution also evolves with time. This is organic and also the living document, and it adapts to the change of the society. Next, we come to the definition of state. So, what is a state? A political organization with sovereignty over territory, population, government, and a law. So, for a state, what it must have? First of all, a state is a political organization with sovereignty over a population. Let's leave it. A political organization. That's it is a political organization, but it must have फर्स्ट ऑफ ऑल ए टेरिटरी. पहले जगह होनी चाहिए ना, कोई जगह होगी, बट जगह ऐसी थोड़ी और कर सकते हैं. ए डिफाइंड टेरिटरी. नेक्स्ट, परमानेंट पॉपुलेशन. एंड ए गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, लॉलेसनेस नहीं होनी चाहिए. ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी. बट ये सोवर्निटी क्या है? व्हाट इज सोवर्निटी? So the supreme power of authority of the state to govern itself without external interference. Right? Or we can say the government has complete power to make decisions for their country. While we can also say that without external interference, the supreme power or authority of a state or more to govern itself. Now, sovereignty can be of two types. Okay, internal and external. Internal means decisions inside the country in the layman term. Let's say if India needs to make any law for its citizens, then without any external interference, then it has an internal sovereignty. And if we say that
India can make any rules, complete authority or freedom, complete freedom to maintain external relations and contract, like इंडिया को ईरान के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जो कि एक हम पोर्ट बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो इंडिया को किसी के इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत ना पड़े, इंडिया चाहे तो बनाए, जिसके साथ जो समझौते करने हैं वो कर सकता है। तब ये जो ऑटोनॉमी हमारे पास है, जो फ्रीडम हमारे पास है, वो हमारी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होगी। देन कम्स द नेशन. What is a nation? So nations can be the group of people having similar cultural affiliation, shared culture. So can we not say that a group of people united by shared culture, language, history, sorry, and ethnicity. Simply we can say similar cultural affiliation. And one more thing, it is also called the imagined community. What it is called? The imagined community. Now here it comes one thing, state. We have learned about the state. State is a political organization, while nation is a cultural identity. The nation is based upon homogeneous identity, while the thing is that they have similar शेयर्ड कल्चर है, एक जैसी लैंग्वेज हो सकती है, हिस्ट्री एक जैसी हो सकती है, उनकी इथनिसिटी है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटीज़ है वो होमोजीनियस है, यानी एक जैसी है, जबकि स्टेट जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल है। अब हम आते हैं बर्थ ऑफ नेशन स्टेट। यहाँ एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्ट फिलाडेल्फिया, ऐसे कुछ नहीं, वेस्टफालिया। वेस्टफालिया 1648. So a nation state is where the boundaries of a nation and a state match. The यूरोप में क्या हो रहा था कि so let's say this is Britain, this is France, and this is Germany. Okay, they speak English, they speak French, and they speak German. वो ये सभी के जो राज्य हैं वो आपस में बराबर आसपास हैं, तो ये अपनी बाउंड्री इधर बढ़ा रहे हैं, ये इधर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, और ये यहाँ इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके राज्य में आ रहे हैं फ्रांस बोलने वाले भी, इनके में आ रहे हैं जर्मन बोलने वाले भी, और यहाँ इस तरह से ओवर मिक्सिंग हो रही है।
अब एक ट्रीटी होती है वेस्टफालिया की, जो कि एक मॉडर्न जो यूरोपियन नेशंस हैं उनको जन्म